हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल वीडियो। हमने अपने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि हाउ टू इंस्टॉल मिनी कॉन्डा एंड गेट स्टार्टेड विद पाइथन प्रोग्रामिंग। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन दिस सीरीज हम लोग हैंड्स ऑन लर्निंग करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लिक ऑन आई बटन एट द टॉप एंड वॉच इट फर्स्ट टू सेट अप योर एनवायरमेंट विच इज़ नीडेड फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। सो जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि ये हैंड्स ऑन सीरीज होने वाला है, सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू ट्राई आउट द कॉन्सेप्ट्स एज यू लर्न देम। मैं ये सारे कंटेंट को अपने गिटहब रिपोजिटरी में भी अपलोड कर दूंगा, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो फील फ्री टू एक्सेस द रिसोर्सेज, ट्राई आउट वेरियस एक्सरसाइजेज ऑन योर ओन एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शंस। हैविंग सेड दैट, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइथन। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू गिव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ पाइथन्स फीचर कि इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय अ पर्सन नेम्ड गाइडो वैन रूसम इन द लेट 1980s, और जब पहली बार इसको रिलीज़ किया गया था अराउंड 1991 में। पाइथन हैज़ अ वेरी सिंपलर सिंटेक्स, और वो आप लोग देखेंगे जब हम लोग इस वीडियो के कोडिंग वाले पार्ट में जाएंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटिवली वेरी इजी टू लर्न व्हेन कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड ऑल। Python code is interpreted line by line rather than being compiled all at once. For example, in programming languages like C and C++, जहाँ पे कि सारा कोड एग्जीक्यूशन से पहले कंपाइल होता है, whereas in the case of Python क्या होता है कि कोड जो है लाइन बाय लाइन को इंटरप्रेट करता है, लाइन बाय लाइन इट इज़ कंपाइल्ड। पाइथन इज़ अगेन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स होता है सच एज पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, वो सारा कुछ पाइथन में भी है। And Python can run on multiple operating systems, which includes Windows, Mac OS and Linux. Now we will move to the actual part of this video, which is the coding part. So for coding, सबसे पहले हमें अपने टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और हमें अपना इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। सो इफ़ यू रिमेंबर कि लास्ट वीडियो में मैंने क्रिएट किया था एंड वी हैड नेम्ड आवर इन्वायरमेंट एज टॉर्च। तो हम लोग सबसे पहले जा कर के इसको एक्टिवेट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे टॉर्च आ चुका है। देन व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें अपना स्टार्ट करना है नोटबुक, विच इज़ अ जुपिटर नोटबुक एंड विच इज़ नथिंग बट अ पाइथन एडिटर, और यहीं पे हम लोग जा करके अपना पाइथन का कोड लिखने वाले हैं। आई ऑलरेडी हैव कपल ऑफ फाइल्स क्रिएटेड, सो विल फर्स्ट गेट स्टार्टेड विथ पाइथन बेसिक्स पार्ट 1, जहाँ पे कि हम लोग कवर करने वाले हैं वेरिएबल्स, प्रिंटिंग, यूज़र इनपुट, डेटा टाइप्स एंड बेसिक ऑपरेशंस ऑन पाइथन। So we'll get started with Python variables which are used to store values in Python. तो जब भी हम लोग ये इक्वल साइन के साथ किसी भी स्टेटमेंट को पाइथन में डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ पाइथन वेरिएबल्स। एंड पाइथन इज स्मार्ट इनफ टू नो कि what is the type of this variable. So in other programming language you also have to define the type of those variables, whereas in case of Python you don't have to do that. तो जब भी हम लोग ऐसे लिखेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई दिस एज एन इंटीजर वेरिएबल। जब भी हम लोग डॉट के साथ लिखेंगे देन इट विल गेट आइडेंटिफाइड एज फ्लोट वेरिएबल्स। जब भी हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट डालते हैं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। सेम वे गोज फॉर boolean variables where you can define true or false. And to run this cell you can also use this particular run command here, and here we are able to run this. There is also a shortcut to run this cell which I'll be using going forward in this particular video, which is command enter, or in case of Windows you can use control and enter. So I'll use command enter, and then we'll move on to the next topic, which is printing and user input. तो लेट्स से यू हैव टू प्रिंट समथिंग इन पाइथन, तो सिंपली इसमें भी काफ़ी सिंपलर चीज़ है। you don't have to define classes and all like main method like in Java, which you have to do. Simply you just have to write print, then give a bracket, and whatever you want to print just give that value. So if you see I wanted to print hello world and I wanted to print the value of x, and let's say you have to append two values here, then you can simply use the comma, and if you remember कि x का value यहाँ पे 10 था और वही 10 यहाँ पे print हुआ है। Now maybe let's say you have a use case where you want to take the input from the end user, तो इसके लिए भी काफ़ी सिंपल चीज़ है, सिंपल वन लाइन का वन वर्ड का फंक्शन विच इज़ इनपुट। जस्ट राइट इनपुट एंड देन इट विल बी एबल टू kind of ask the input from the end user. So if I execute this, it is saying enter your name, and maybe simply I can type here as John, and you see now if we have used this print statement hello and then the username hello, you can see whatever we had inputted as John, and then that John has come here. Same way you can also ask for numbers key, how do you print any number. You can also make use of this one. Let's say I want to print 12, and I have to give enter, and you see you entered, and then whatever the user input which I had given has come here. Now
Moving on to the third topic, which is Python data types. So we'll also kind of go through each data types which Python has one by one. So if you see x equals to 10, so we'll print x and type of x. So you can also guess while I'm running all these cells, key what could be the type of this. So I know that so I have defined it as without any quotes, without any dots, and without any true or false values. So I know okay, the kind of the type of this particular variable would be integer, and that's what the Python has identified. In case I am using this dot points here, then the type will be converted as a float, and that is something which you can see this type is float for this particular variables. Same way you have another data type which is kind of strings, and जब भी हम लोग को characters को double quotes या single quotes में enclose करके रखते हैं, then that is kind of considered as a string. You can also change this double quote to single quote and check whether it is working fine or not, and you are free to kind of play around with this particular cell or all this notebook which I'll be giving you to all of you via our GitHub repository. Then moving on to the fourth variable types, which is booleans, और जब भी हम लोग true या false value किसी चीज़ किसी भी kind of variables को assign करते हैं, then the type of them would be considered as BOOL. It could be either true or false, and you have to make sure कि T and F are in the caps. Then moving on to the list part, and list is another kind of variable where you have to kind of store the collections of item. And एक interesting चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आप चेक कर रहे होंगे कि in this particular list मैंने integer भी रखा है, मैंने string भी रखा है, और मैंने float भी रखा है. And that is the beauty of Python कि in case of programming languages like Java ये वाला चीज़ possible नहीं था. You have to define the type of that string. I meant to say type of that list. Whereas in case of Python ये list का type define करने का जरूरत नहीं है. You can kind of store any variable types in your list, and if you see the type of this particular my list is my list. Then list के similarly ही एक और चीज़ है Python में which is called as tuples, which is exactly the same with list, but here is one thing is that the tuples are immutable, which means once we have declared the tuple, you cannot kind of change the values or modify the tuples. Whereas in the list you can add the values, you can remove the values, but the same things are not possible in tuples. To declare, if you see list are declared with kind of square bracket, whereas tuples are declared with this parenthesis, and automatically the Python will be able to understand whether this is a list or whether this is a tuple based on the declaration which you are going to do. Then moving on to the seventh data type, which is the dictionary here. And again, dictionary is similar to if you have worked with Java, where we have maps. Same way in Python we have dictionaries where it is kind of stores the values in terms of key and value pairs. So if you see here, the key is name and the value is Alice, key is age, the value is 25, key is student, the value is boolean, which is true or false. And if I print the kind of the type of this person, which it shows is dictionary. So this is about the different data types which are present in Pythons. Now we will also quickly move and see some of the basic operations which Python supports, and I know kind of all the basic operations in any mathematics, any programming languages support. Python also supports that. So now first we'll do is we'll declare a equals to 5 and b equals to 3, and we'll first start with addition. Addition के लिए सबसे पहले सबसे easy चीज़ है plus operator, you give plus, and if you see 5 plus 3 is 8. Same way you have subtraction, if you give minus, then if you see 5 minus 3 is 2. मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ करना पड़ता है, और जब हम लोग देखेंगे 5 into 3 is 15. डिवीज़न के लिए क्या होता है कि ये स्लैश यूज करना पड़ता है, एंड देन स्लैश के साथ जब हम लोग करेंगे तो दिस विल गिव यू डिवीज़न रिजल्ट की 5 divided by 3 is 1.666667. And one next thing is fifth one, which is one interesting one, कि in case you want to have integer division done, then in case of one slash you have to give 2 slashes. अभी integer division क्या है, तो you want only the integer part, not the decimal parts. Then in that case you can use this integer division, and if you see if I run this cell, so 5 divided by 3 is 1 in integer. So we have removed all this floating part from here. Similarly, there is also something called as modulus. अगर आपको मैथमेटिक्स याद होगा तो मॉडुलस इज समथिंग विच इज़ अ रिमाइंडर. जब भी हम लोग किसी भी इंटीजर को अनदर इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बच जाता है उसी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं. तो अगर हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे 3 से
So 3 into 1 3, and then the remainder will be 2, and that's what the modulus gives. Then again there is also something called as exponentials, which is if you give 2 stars, so this will be kind of considered as 5 to the power 3. So 5 into 5 into 5 will be kind of 125, and that's what it has printed. So with this, now we will move on to the second part of this Python learning series, where the things will become little more interesting, जहाँ पे कि हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे डिफाइन होता है, हाउ डू वी डिफाइन लूप्स इन पाइथन, हाउ डू वी काइंड ऑफ यूज स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड डिक्शनरीज, एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस विच आर बेसिकली यूज्ड बाय डेटा साइंटिस्ट ऑन अ डेली बेसिस. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कंडीशनल स्टेटमेंट. तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि डिफरेंट ब्लॉक को जो भी एग्जीक्यूट करना होता है बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशंस, इन दैट केस वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट. इन पाइथन वी कैन सिंपली यूज इफ एंड एल्स एज अ कीवर्ड्स to define any conditional statement. So let's say I have declared age as 13, and I am printing here if age is greater than 18, print you are an adult, else print you are a minor. तो since conditional statement अगर मैं इसको print करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है कि you are a minor because मैंने यहाँ पे define किया हुआ है 13. So let's say I define this as 30 here, which is definitely greater than 18. So this should now print as you are an adult. Similar to this, there is also in between elif condition. So in case you want to have multiple conditions written or based on the certain different conditions. So let's say if grade is greater than 90 or equals to 90, you want to print as A. Similarly, if it is greater than 80, you want to print as B. If it is greater than 70, you want to print as C. Else you want to print as F. In these conditions, what you have to write is if, elif, and then at last else. So let's say I have defined grade as 85, and now it should print B, and that's what it has printed because 85 is greater than 80 and lesser than 90, and that's what it has printed here. Now with this we will move on to strings part. तो जैसा कि मैंने पिछले कुछ देर पहले बताया था कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो दैट वेरिएबल इज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग वेरिएबल. तो लेट्स से यहाँ पे मैंने string 1 को लिखा हुआ है hello world with double quotes, and if I print this, so this will print me kind of hello world. You can also modify this as single quote and check ki what it is printing. Again things remain same. यहाँ पे एक interesting चीज़ है कि let's say you have multiple line strings. In case hello is written here and world is written here, तो अगर आप चेक करेंगे कि now it is not working. If I print here, it is giving an error कि unterminated string literal. So in cases where you have multiple lines of string, तो पाइथन के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि you have to simply give 3 quotes, single quotes at the beginning and 3 single quotes at the last. And now if you print this, so if you see the multiple line inputs have also been taken care of. So that's the beauty of Python. Again this is also one interesting thing when you are working with data science, कि काफ़ी टाइम पे आपको multiple lines of मल्टीपल लाइन का स्ट्रिंग के साथ काम करना पड़ेगा. इन दैट केस यू हैव टू यूज 3 कोड्स both at the starting and at the ending. So now moving on to some of the operations on strings. So let's say you have to just convert all of them into uppercase. So simple, you can use this uppercase UPPER method of inbuilt method of Python, and then this will be converted all of them as uppercases. In case you want to concatenate two strings, simply you just have to use plus operator, and then it will be concatenated. So let's say string 1 is hello world, string 2 is also hello world, and if string 2 I want to kind of concatenate string 1 plus string 1, then it should give me 2 hello worlds written printed here. Now there is also something called as substring. In case you want to replace some word, like in case I want to replace this word as Python, so I want to do, so simply I can use this replace function, and this would print hello Python instead of hello world. Then to find the length of your string, you can simply use this length function. This will give you the length of this kind of string, and which is kind of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, and that's what it has printed. Again, two interesting things here. Let's say you want to kind of slice your string. So slicing means ki let's say you want some part of the string to be printed. In that case, you can basically use this particular thing here, ki start from 0 and go till 13th. So again if like in any programming language, things start with 0, so 0th index you take and print me all the way till the 13th, so it should print hello world. In cases where you want to just, let's say I have a use case where I just want to print hello,
So what I'll do is I'll take 0 1 2 3 4. So this should give me hello, right? No, because what happens in Python is it kind of excludes the last index. So in cases here, if you see, it has included the first index, which is the starting index, and which is HELL, and it has excluded the fourth index. So in case you want hello to be printed, then you have to give the last, the 5, so that fifth one is excluded and I get the kind of the till the fourth one, all the kind of values which are there in this particular string. Similarly, you can also slice your string in the reverse by simply making use of so again, this is considered as -1, -2, -3, -4, -5, -6, and -7. So I'm starting with -7 and I want all the way till -1, and that's what it has given, only the world part. So now, hoping that string and all these operations of strings are clear, so we will now move on to loops part. So again, let's say whenever you want to kind of repeat the block of code multiple times, in those cases what we do is we use loops. For example, let's say I have a list and I have declared that list as fruits, and I have put apple, banana, and cherry inside that list. Let's say I want to print all these values of this particular list one by one. So I can simply make use of for loop here. So simply to write that key for, I can assign any name here in a list which is whose name is fruits, print all that value. So this would print one by one apple, banana, and cherry. Similar to for loop, we also have while loop. So in cases where you continuously want to iterate until a condition is matched, in those cases we will use while loop. तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि जब तक काउंट जो है 5 से नीचे है, यू वांट टू प्रिंट दिस एंड एवरी टाइम ऑल्सो इंक्रीजिंग दिस काउंट, और इनिशियली मैंने काउंट को 0 डिफाइन किया है, तो ये वाला जो है 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करेगा, और फिफ्थ टाइम में जब ये मैच करेगा कि ये जो 5 है वो लेस देन 5 नहीं है, तो इट विल नॉट प्रिंट दैट कंडीशन एंड दिस कंडीशन विल बी ब्रोकन. सिमिलर टू दिस, एक और चीज़ है लूप में कि एक रेंज यूज़ कर सकते हैं पाइथन में. तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपको लेट्स से यू हैव से डिफाइंड नंबर कि आपको 0 से लेकर के 5 या 6 तक प्रिंट करना है, तो इन दैट केसेस यू कैन सिंपली यूज़ रेंज. एंड अगेन रेंज में क्या होगा कि जो लास्ट वाला जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा और स्टार्ट करेगा 0 से. सो इफ यू सी हियर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल प्रिंट till 4. So 0 1 2 3 4 5 digits it has printed, but then it has excluded the 5. एक और इसमें है कि लेट्स से यू वांट टू काइंड ऑफ गिव अ स्टेप कि स्टार्ट करना है रेंज को 10 से, स्टॉप करना है 20 पे, और यू वांट टू प्रिंट वन बाय वन, एक को स्किप करना है, तो देन दैट केस यू कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. एंड इफ यू सी हियर इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड इट विल गो अंटिल 20. जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, और ऑन दिस स्टेप ऑफ 2, सो 10 12 14 16 and 18. So this was something about loops which we have kind of learned here. Now we will move to the list part. तो लिस्ट भी जैसा कि प्रीवियसली मैंने बताया था कि लिस्ट में क्या होता है कि यू कैन सिंपली डिफाइन एनी लिस्ट विद दिस स्क्वायर ब्रैकेट. एंड इफ आई जस्ट सिंपली से कि ये नंबर्स वाला जो लिस्ट में डिफाइन किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है. लेट्स से यू वांट टू एक्सेस द लिस्ट का एलिमेंट, तो नंबर्स के अंदर अगर 1 डालेंगे तो इट शुड गो एंड गिव मी दिस 0 and 1th element of this particular list, which is 2. So again everything remains just like any other programming languages. It starts with 0 1 2 3 4 and I want to know what is that first index of this list, so I can simply give it 1. So let's say I want to get the first index, so in that case simply I can use 0 and run this command, and this will give me this first index. Similarly you can also modify your list. So simply इसमें क्या करना होगा कि लिस्ट का जो वेरिएबल का नेम है वो, and then which position you want to do, kind of modify, and with what value you want to modify. So now I want to modify the second position as thrwe. So instead of this 3 I want this thrw to be present there. So I can simply use run this command. If you see 1 2 3 and 4 5 remains same. You can also append a list. So you can to append any element to the list at the last, you can simply use this append method, and this will go and print 1 2 3 4 5 and 6. So it was until 5 and now we have appended a new value here. Then similar to string which we had shown earlier, we also have slicing of list. In slicing of list as well, the concept remains the same, that in case you want to slice your list and based on some positions, तो लेट्स से कि मैं 0 से लेकर के 4th इंडेक्स तक का
प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इन दैट केस आई कैन यूज 0 to 4. So in that case it will print 0, 1, 2, 3 and 4. So fourth will be excluded, so it will print from 1 to 3. Same way from 3 to 6, if I have to print, it will start from third index, so 0, 1, 2, 3, it will start from 4 and will print until 6. So if I execute this, you see 1, 2, 3 and 4 have been printed. In the second print it has printed 4, 5 and 6. Now moving on to the next operation on state on list, which is list concatenation. So list concatenation, again, you can simply use this plus here, and this will kind of create a new list, and that list will contain 163 and all the values which are there from starting from second index until the last. So if I print this, if you see here 163 which have come from this particular list, and from the numbers list it has taken starting from second index till the last index. So second index is 0, second index 0, 1, 2, which is third 3, so it has taken from 3, 4, 5, 6. Now a similar feature which is extending a list. तो यहाँ पे क्या है कि लिस्ट कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जो न्यू लिस्ट है उसी में हम लोग 7 और 8 को एक्सटेंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखेंगे 1, 6, 3, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8. अभी ये क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है. लिस्ट कॉन्कैटिनेट में भी तो वही काम किया जो प्लस ऑपरेटर के साथ कर रहे हैं, और एक्सटेंडिंग में भी वही काम हो रहा है, जो कि हम लोग दो न्यू वैल्यूज़ को हम लोगों ने ऐड कर दिया. यहाँ पे एक चीज़ सिंपल डिफरेंस ये है कि जब भी हम लोग कॉन्कैटिनेट करते हैं देन विल हैव टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट, whereas when we are extending a list, then in that case we don't have to create a new list. So I mean in memory wise as well, if you see कि this will go and take a new memory space, whereas this is kind of it will use the same memory and it will kind of just add those two values here. So these are the major differences between list concatenations and list extending a list. Then to find a length of a list, you can simply use length function similar to string, and it will give you the length of the list. And to in cases where you want to check whether any item is there in your list or not, you can simply use in function, and you'll say that print 3 in new list and print 10 in new list. One should print true, one should print false. So if you see, one has given the true, one has given the false. So now the list, most of the operations on list have been completed. We will now move on to the part which is dictionary. So again, dictionary, like I had mentioned initially, it is a similar to Java's map function, where you have key and value pairs. So again, I'll just simply print this particular dictionary here, where you have name as Alice, age 25, is a student is true. तो लेट्स से कि अब मुझे एक्सेस करना है इस लिस्ट के किसी एक की को, तो सिंपली क्या करना है, की का वैल्यू क्या है, नेम का वैल्यू एलिस है. इफ़ आई वांट टू काइंड ऑफ फिच दैट वैल्यू, तो आई हैव टू गिव डिक्शनरी का नेम, यहाँ पे मैंने पर्सनल दिया हुआ है, एंड विच इज़ दैट कीज वैल्यू यू वांट टू गिव. तो की मैं नेम का वैल्यू चाहता हूँ, सो इन दैट केस आई सिंपली गिव नेम हियर इन डबल कोट्स एंड दिस शुड रिटर्न मी एलिस. Similarly, in cases you want to add a new pair कि अगर इसमें ऑलरेडी 3 की एंड वैल्यू पेयर्स है, मैं फोर्थ को ऐड करना चाहता हूँ, तो आई कैन सिंपली यूज that name of that particular variable of dictionary and give this a square bracket, and what is that new key which you want to assign and what is that value for that particular key. So this will give and add a new key and value pair here. To get the all keys, you can use the person.keys. To get the all values, you can use person.values, and this will give you all the dictionary values. This will give you all the dictionary keys. Same way, to get all the key and value pairs of any given dictionary, you can use items. तो items क्या करेगा, जितने भी items है, key and value pairs है उस dictionary में, उसको return कर देगा. Now I want to kind of know कि only give me the subset of this particular dictionary. मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे सबसेट चाहिए. तो उसके लिए यही कर रहे हैं कि person.items को यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें कह रहे हैं कि give me all the key and value pairs if key is in age and grade. तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये वाला जो है बस एज वाला जो की एंड वैल्यू पेयर है, बस ग्रेड वाला जो की एंड वैल्यू पेयर है उसी को रिटर्न करेगा. तो आई होप यू इट इज़ क्लियर कि person.items में गिव मी ओनली दोज आइटम्स हुज की इज इन एज एंड ग्रेड. Now just to check whether any key is there in that dictionary or not, so you can also use in functionality of Python here, same to what we had used in list. So one will return की person तो है, but
no sorry, name to hai but city is not there. Then you also kind of update the value. You can simply use this age function and it will go and update that value in case this particular thing does not exist. जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि अगर ग्रेड नहीं है तो उसको ऐड कर देगा, अगर ग्रेड या फिर वो की ऑलरेडी है तो उसको सिंपली जा करके अपडेट कर देगा. तो इंस्टेड ऑफ नाउ 25 you are getting age as 26. To remove you can simply use this and del function. तो del person and age and ये वाला जा करके जो एज जो है उसको रिमूव कर देगा और बाकी नेम स्टूडेंट और ग्रेड जो है वहीं पर रहेगा. And with this 90% of this tutorial has been completed, and now we are moving towards the third part of this tutorial where we will learn about Python functions, lambda, map and filter. And once these are completed then you all will be very ready to get started with data science. तो विल स्टार्ट विद पाइथन फंक्शंस. तो फंक्शंस क्या होता है कि एक रीयूजेबल ब्लॉक्स होता है टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क. सो टू डिफाइन अ फंक्शन हम लोग क्या करना पड़ता है, सिंपली वी हैव टू राइट DEF, name our function any name you can give a parenthesis, then give a colon and write your code here. So let's say I want to print hello from greet function via this particular function, and to call a function I can simply whatever the name which I have given here that I have to give here, and based on the parenthesis as well, and then I'll call this and this will go and print hello from greet function whatever I had defined here. Function में ही you can also kind of assign parameters or argument. So let's say I want to pass one argument in this greet person function and that argument is Alice. So once I do that, now this will go and print hello and automatically take the whatever the argument which we have given from here to this particular function, and hello के बाद जो भी मैंने यहाँ पे argument पास किया है वो print होकर के hello Alice आ जाएगा. सेम वे यू कैन पास n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पे हम लोगों ने एक आर्ग्यूमेंट को पास किया था, यहाँ पे हम लोग दो आर्ग्यूमेंट को पास कर रहे हैं. और इफ यू सी टू कॉल दिस ऐड नंबर फंक्शन वी कैन पास टू आर्ग्यूमेंट फ्रॉम हेयर and this would return कि print of x and y is result. So x is 5, y is 3 and result is 8. फंक्शन में ही एक और पार्ट है विच इज़ रिटर्न स्टेटमेंट. तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि वॉट एवर is the output of that particular function, it will return back to you, and you can also access that return function via making use of this equals operator. So let's say I have a function multiply जो कि return करता है x into y, और मैं इसको execute करता हूँ और I want to get that value whatever this function is returning to me and assign that value as a result and then print result here. So if you see here now x multiplication of 3 and 5 is 15 and that has been returned to here, and that is something which we have printed here. Now we'll see again one more function here कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि def print message और यहाँ पे print हो जा रहा है, और let's say कि यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ return value equals to print message hello world and then print this return value. तो we'll see कि ये क्या कर रहा है कि since यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है राइट, तो ये जा करके पहला प्रिंट किया विच इज़ नथिंग बट आर हेलो वर्ल्ड विच वी हैव पास्ड हेयर. एंड एक हम लोगों ने ये किया क्योंकि यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, बट यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, बट स्टिल वी हैव असाइन दैट वैल्यू टू अ रिटर्न वैल्यू और देन वी आर प्रिंटिंग दिस. तो इन दैट केस इट हैज़ प्रिंटेड नन, क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. देन वन मोर ब्यूटी ऑफ पाइथन इज़ कि यहाँ पे आप मल्टीपल रिटर्न भी करवा सकते हैं कि लेट्स से आई वांट टू रिटर्न टू वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विच इज़ गेट वैल्यूज. तो टू गेट दैट और मैं प्रिंट करूँ अगेन आई विल कीप दैट वैल्यू इन रिजल्ट एंड प्रिंट दैट रिजल्ट वैल्यू, एंड इंस्टेड ऑफ वन वैल्यू नाउ दिस शुड गिव मी टू वैल्यूज 10 and 20 both in this particular result. And this is something which will be kind of mostly using when you are kind of developing in your models and in your data science projects. Now moving on to the lambda functions, again very important ones, and most of the people in data science community use this lambda function on a very daily basis. So again यहाँ पे क्या होता है कि instead of defining our function like this regular function, हम लोग simply one line में इसको define कर सकते हैं कि ये function क्या कर रहा है कि return कर रहा है x kind of x का square को return कर रहा है. Then simply वही सेम चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा x का जो वैल्यू है वो x into 2 होना चाहिए. तो आई एग्जीक्यूट दिस एंड देन इफ आई सी आई प्रिंट वन स्क्वायर वाला एंड देन स्क्वायर लैम्डा, और दोनों में हम लोग 5 को पास करें, द वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ देम शुड बी द सेम. So 25 25. Same way in cases you want to have two
पैरामीटर्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं x एंड y, और इसका जो वैल्यू होगा वो x प्लस वाई होगा, और जो हम लोग पास कर रहे हैं x एंड y का वैल्यू 5 एंड 6, एंड दिस टू डिटरमिन द एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम विच इज़ 11। तो होप कि लैम्डा फंक्शन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट टू टॉपिक्स विच आर मैप एंड फिल्टर। तो मैप में क्या होता है कि सिंपली यू हैव टू मैप, यू हैव टू, लेट्स से यू हैव अ लिस्ट नंबर्स जहाँ पे कि 1 to लेके 5 तक है। यूजिंग मैप व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मैप ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस लिस्ट बेस्ड ऑन योर ऑपरेशन। सो लेट्स से इन दिस केस व्हाट आई वांट टू डू इज कि जितना भी नंबर्स है सबको मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ। तो एक तो अप्रोच हो सकता है कि आई लूप थ्रू ईच वन ऑफ देम एंड देन स्क्वायर। Then the better approach and used approach, the feature of Python map here is कि you can simply use map and use lambda and square all of those number. तो if I execute this, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 and 5 का 25, all of them have been printed. Then same way if you want to have a cube of this, so you can simply do x into 3 and then you will have a cube of all your numbers just by using one line. So that's the beauty of Python key, don't have to loop through this and then kind of do all the operations and then get these values. Rather than that, you can simply use map function. Similar to map, you also have filter कि अभी सबको सारे वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए, rather than मुझे वो filtered वैल्यू चाहिए based on my condition. तो here if you see कि I want all the even numbers from this particular list. तो नंबर मैंने 1 से लेकर के 8 तक लिखा हुआ है, और आई वॉन्ट ऑल द इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होता है कि जिसको भी हम लोग 2 से डिवाइड करने पे 0 इसका रिमाइंडर आता है, तो वो सारा इवन नंबर्स है, एंड आई वांट टू फिल्टर दोज नंबर्स। सो ये जो है वही सारा नंबर्स देगा इस लिस्ट में से जो कि इवन नंबर्स है, जो कि डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0, द रिमाइंडर ऑफ दैट इज़ 0। सेम वे टू फाइंड आउट द ऑड नंबर, सिंपली हम लोग यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 लगा सकते हैं, and it will filter out only those values from that particular list which are odd. And if you imagine ki if you had to do it same thing in Java, then you would have to run multiple loops, then kind of do check, and then you have to return. But in case of Python, in case of filter, you can easily find out odd numbers and even numbers just by one line of code. And with this we have completed the crash course on our Python tutorial. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग पाइथन के कुछ पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन विल गेट स्टार्टेड विद सम ऑफ द डेटा साइंस पैकेजेस एज वेल। तो बने रहिए हमारे साथ,